from the value of D. You have to find the value of dd upon dp. You can obtain this dd upon dp by differentiating d with respect to p. By differentiating d with respect to p. बराबर है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बड़ा दिया हुआ है. You can simplify the given sum by using the formula. Theta is equal to minus p upon d into dd by dp. ये देखो, तुम लोग के पास सब में बड़ा ईटा है, तुम लोग के पास सब में बड़ा डी है, और तुम लोग के पास सब में बड़ा डी डी बाई डी पी है. तो बोल आराम से बड़ा प्राइस का वैल्यू मिल सकता है कि नहीं. सम सॉल्व करोगे ना बड़ा सम, तो उसमें बड़ा तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा बड़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बड़ा सॉल्व करोगे तो उसमें तुम्हें दो वैल्यूज मिलेंगे बड़ा. वन वैल्यू it will be always a positive, whereas the other value but it will be always a negative. One value will be always positive, other value always it will be a negative. You will have to select the positive value, saying that the price is always a positive, price can never be a negative. That's the block. So I think this you can do better for your homework. This you can do better for your homework, right? Okay. And now everyone will come to beta page number 109. Everyone will come to page number 109. और ये जो मैं पॉइंट्स एक एक करके बताऊंगा ना, दे आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये सब तुम लोग को बड़ा याद रखना है. ये सारे पॉइंट्स बड़ा तुम लोग को याद रखना है. चलो, फर्स्ट पॉइंट बड़ा इज demand is a decreasing function of the price. But when I'm talking about the demand is a decreasing function of price,
इसका मतलब we know that for the decreasing function the value of the first order derivative always but it should be less than 0. Therefore the value of dd upon dp is less than 0. Next, price and demand they are always the positive. तो चेक करो फॉर्मूला में तो बड़ा पहले से ही माइनस साइन था. dd अपॉन dp इज ऑलवेज नेगेटिव. मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो माइनस ऑफ माइनस इट विल बिकम प्लस. So you will get the answer as eta is equal to minus p upon d dd upon dp which is greater than 0. That means in general the value of eta is always considered to be as a positive. And now let me study about the different natures of different natures. If eta is equal to 0, elasticity of demand is equal to 0. It means the demand is a constant function of price, and the nature of the demand is it is perfectly inelastic. You will have to learn this. Learn karna hai. It is considered to be as perfectly inelastic. Next, if eta is lying between 0 to 1, the value of eta which is greater than 0 but less than 1, then the demand is relatively inelastic. Next, if eta is equal to 1, the demand is exactly proportional to the price. The demand is said to be unitary elastic. सब लोग बड़े याद करने की ट्राई करो. तुम लोग ने इकोनॉमिक्स में भी ये सब पढ़ा हुआ है अबाउट द डिफरेंट नेचर्स ऑफ डिमांड. If eta is greater than 1, eta is greater than 1 से बड़ा है then the demand is considered to be as relatively elastic. ये सारे पॉइंट्स बड़ा लर्न कर लेना क्योंकि आने वाले सब में बड़ा पूछा जाएगा कमेंट ऑन द रिजल्ट. कमेंट ऑन द रिजल्ट पूछा तो इसलिए वहां पे फिर तुम लोग को बड़े ये सब नेचर्स वहां पे तुम्हें बताने पड़ेंगे. Question number 10. If the demand function is d is equal to 50 minus 3p minus p square, find the elasticity of demand at number 1, p is equal to 5, number 2, p is equal to 2. Comment on the results. So you can write down the demand function is given as demand function is given as d is equal to 50 minus 3p
minus of p square. Oh, sure. Head on. Differentiating d with respect to p. Differentiating d with respect to p. Therefore, dd upon dp is equal to 50 is a constant. Constant का derivative 0 minus 3. P का derivative 1. P square का derivative 2p. Therefore, dd upon dp answer is minus 3 minus 2p. Therefore, dd upon dp. That we remove minus sign to be as common. Minus 3 plus 50. That is that is dd upon dp is equal to minus of 2p plus 3. Next one again, the elasticity of demand. The elasticity of demand is given by minus p upon d. In dd by dp only. Okay. Therefore, theta is equal to minus p upon d. 50 minus 3p minus p square into dd by dp is minus of 2p plus 3. Okay. Theta is equal to minus minus but will become plus p into 2p plus 3 upon 3 minus 3p
minus p square. Open the bracket. Open the bracket. It is eta is equal to 2p square plus 3p upon 3 minus 3p minus p square. Now is 1. Case number 1 when p is equal to 5 theta is equal to question mark and p is equal to 5 theta is equal to question mark. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Theta is equal to 2 into 3y square plus 3p p का वैल्यू और 5 upon 50 minus 3p p का वैल्यू 5 minus y square y का स्क्वायर 25 25 2 जा 3 5 जा ये हो जाएगा 50 minus 3 5 जा 15 5 का स्क्वायर 25 50 plus 15 65 upon and therefore eta is equal to 6.5.
ये हो but 6.5 is greater than 0. Sorry, greater than 0 नहीं बता, directly greater than 1. 6.5 is greater than 1. So eta is greater than 1. तो ये देखेंगे, therefore conclusion चलो बड़ा अभी मैंने जो पॉइंट्स भी रिमेंबर पढ़ा था उसमें चेक करो बड़ा when the value of eta बड़ा when it becomes greater than 1, so you can write down the demand is relatively elastic the demand is relatively elastic when the price is fine, when the price is fine. Ready over solo? Next, case number 2. Case number 2. When P is equal to 2, and P is equal to 2, elasticity of demand is equal to question mark. Elasticity of demand is equal to question mark. Therefore, theta is equal to 2 into plus 3 into 2 upon 50 minus 1. 3 into 2 minus of 2 square. 2 का square is 4. 4 2s are 8. 8 plus 6, 50 minus 1. 6 minus 4.
3 minus 10. Answer is 7 by 20, and that answer is 0.35. The value of eta is equal to 0.35. चल भाई start कर, but but 0.35 lies between 0 and 1. So 0 is less than eta, eta is less than 1. चलो भाई तुम एक कंक्लूजन बोलो. बोलो, the demand is relatively inelastic. The demand is relatively inelastic. When the price is too. Question number बड़ा 11 you mark कर दो, homework करो. Question number 11 बड़ा you mark कर दो, homework करो. और जो question number 7 के अब 3 cases है ना, but it is based upon the relation between marginal revenue, average revenue, and elasticity of demand. So, marginal revenue is equal to average revenue into 1 minus 1 upon eta. Out of the 3 values, when you know any of the 2 values, you can find the third value by using this formula. So, question number 7 का first number, find the marginal revenue if the average revenue is 45 and the elasticity of demand is 5. Here average revenue is 45. Elasticity of demand is 5. So we want to find the marginal revenue. We want to find the marginal revenue. Ready? तो बहुत ही सिंपल सा बड़ा
फॉर्मूला है बेटा, ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू बेटा इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा बेटा। Marginal revenue is equal to average revenue is about 45, 1 minus 1 upon theta का value 5, 45 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया तो 4 upon 5, 5 1 जा 5 9 जा, wait लीजिए, marginal revenue is equal to 36। अच्छा, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 3 में जहाँ पे प्राइस दिया है ना बड़ा, प्राइस दैट मीन्स दैट इज एवरेज रेवेन्यू। मैं स्क्रीन शेयरिंग बड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, नोट कर लो सब लोग। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मींस इट इज प्राइस। सम नंबर 2 सम नंबर 3 तुम लोग करो सॉल्व। अभी तक मैंने बोलना स्टार्ट कहाँ किया भाई? सेकेंड सम का आंसर क्या है? 42। और थर्ड सम का आंसर
थर्ड सम करो बड़ा, थर्ड सम। चलो थर्ड सम सब लोग बड़ा होमवर्क में करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सम बड़ा होमवर्क में करना सब लोग।